Am I audible? Yes, ma'am. So new topic, next topic is moments about origin. Moments in statistics basically the strong tools which can describe the nature of a distribution, right? So we will see moments about origin and later on moments about any arbitrary point. So suppose whenever we are talking about the random variable, so variable may be continuous random variable and the discrete random variable. तो अगर मेरे पास x है, if x is continuous या discrete भी हो सकता है random variable, अगर continuous होगा तो probability density function होगा with PDF, and if discrete then probability mass function. Density function को हम डिनोट करेंगे fx and x से और मास फंक्शन को हम डिनोट करेंगे px xi. Then rth order moment of x is given by, it is denoted by mu r dash and it's equals to expected value of x raised to the power r. Rth moment order of the moment is denoted by mu r dash and its value will be equal to expected value of x raised to the power r. So expected value of x raised to the power कितना हो जाएगी? In case of continuous random variable, its value is equals to integral minus infinite to infinite x raised to the power r fx of x dx, and this is for continuous case. और अगर हम discrete की बात करें then mu r value होगी, it's equals to x I raised to the power r px of xi. I varies from 1 to n. This is the value of rth order moment in case of discrete random variable. So these are the moments about origin. Now अगर suppose मुझे first moment about origin evaluate करना है, then I'm going to take the value of r is equals to 1 and it's mu1 dash. This is my first moment about origin, first order moment about origin, which is denoted by mu1 dash and its value is equals to expected value of x, means mean. And you know how to evaluate expected value of x, it's equals to x fx of x dx, and in case of discrete its value is equals to I is equals to xi px of xi. This is again for discrete, this is for continuous, and in the same way you can find out the second order moment about origin, which is mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash. So जब हम आगे distributions पढ़ेंगे, we will evaluate the moments for each distribution. Next जो यहाँ पर आता है मेरे पास next topic, yes. Next is the moments about any arbitrary point. This is the moment about origin. Now we are evaluating the moments about any arbitrary point. Like that arbitrary point is A. So it's denoted by mu r. About origin को हमने denote करा था mu r dash
अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट के अराउंड इवेल्युएट कर रहे हैं, सो इट्स डिनोटेड बाय म्यू आर एंड इट्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस a रेज टू द पावर r। जब ओरिजिन के अराउंड था तो यहाँ पर वैल्यू थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर r। ठीक है, ओरिजिन था, 0 था। अभी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट के अराउंड कर रहे हैं, तो इट विल बी x माइनस a रेज टू द पावर r। सो अगेन इस एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी होगी कॉन्टिन्यूअस के केस में x माइनस a रेज टू द पावर r fx of x dx, and in case of discrete its value is equals to I is equals to 1 to n xi minus a raised to the power r px of xi. This is continuous case and this one is discrete case. In the same way, अगर मुझे moment evaluate करना है about mean, this is for any arbitrary point. Now moments about mean. Moments about mean. मीन को हमने यहाँ पे डिनोट करा है म्यू एक्स और एक्स बार भी लिख सकते हैं। सो अगेन इट्स डिनोटेड बाय म्यू आर एंड इट्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया है मेरे पास, मीन आ गया है। ठीक है, तो जो मोमेंट्स अबाउट मीन होगा, मोमेंट्स अबाउट मीन इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x minus mu x raised to the power r fx of x dx and xi minus mu x raised to the power r px of xi dx. xi will be 1 to n. Again this is for continuous and this one is for discrete. अगर मैं सेकेंड ऑर्डर मोमेंट्स यहाँ पर निकालूं तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आता है विच इज बिटवीन द वेरिएंस एंड द मोमेंट्स एंड दिस इज इक्वल्स टू μ2 की जो वैल्यू होती है, μ2 इज अ वेरिएंस एंड इट्स इक्वल्स टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस वन। अगर मैं यहाँ पर इवेल्युएट करूंगी r इज इक्वल्स टू 2 और इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगी, then we will get this relation μ2 is equals to μ2 dash minus μ1 dash square, and this relation is hold for both continuous and the discrete cases. Is this clear? Later on we will see problems based on moments also. Is this clear to you? कि moments क्या होते हैं? We have studied moments about origin, moments about any arbitrary point, and moments about mean. Is it clear or any problem? वॉइस आ रही है मेरी? No need to write your attendance. My voice is clear or not? Clear है मैम? Okay, fine. Now next topic is moment generating function. Moment generating function. Is this screen visible? Yes, ma'am. So moment generating function, which is denoted by mxt, it is denoted by mx and t, and it is the expected value of e raised to the power tx, right? तो moment generating function जो होता है
फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, अगर x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है देन इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे e raised to the power tx fx of x dx, and if x is discrete random variable then e raised to the power txi px of xi dx. This is we have written here the moment generating function in case for the continuous random variable and in case for the discrete random variable, if f of x denotes the probability density function and px of xi is the probability mass function. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, वी हैव ऑब्टेन्ड द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स एंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. उसके लिए वी हैव एक्सपेंडेड दिस एक्सपोनेंशियल टर्म. एक्सपोनेंशियल टर्म का जो एक्सपेंशन होता है इट्स x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो ये इसको एक्सपेंड कर दिया गया है यहाँ पर. देन सेपरेटेड, so we can write the moment generating function in terms of moment also. This is my first moment mu1 dash. mu1 dash means the expected value of x. यही हमने moment about origin निकाला था. mu r dash is equals to expected value of x raised to the power r. तो mu1 dash की मैं बात करती हूँ, so it's expected value of x. mu2 dash means expected value of x square and so on. So expected value of x square कितना हो जाएगा, x square fx of x dx minus infinite to infinite. So this is we have written mu1 dash, then mu2 dash and so on mu3 dash. So in the general sense, the moment generating function will be equals to summation of mu r dash t raised to the power r by r factorial. Or we can say that the coefficient of t raised to the power r by r factorial in this expansion denotes the rth moment of random variable about origin. Okay, so this is the relation between the moment generating function and the moments about origin. Is this okay? Is this okay? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, next is moment generating function for the sum of two random variables. So here you see that we have two random variables here. X and y with the two random variables. यहाँ पे आप देख रहे हो x and y with the two random variables and the corresponding moment generating function for x is mxt and y is my of t. So from this statement, mx plus y of t is equals to mxt multiplication with m by t. And here is the small proof for this. Suppose mxt, by the definition of mxt, it's equals to expected value of e raised to the power tx px xi, right? Discrete random variable के केस में ये लिया है हमने. m by t, this is from the definition of the moment generating function where px of xi and py are the probability mass function of x and y. Now we have evaluating the joint moment generating function of x plus y. तो यहाँ पर जो होगा वेरिएबल कंबाइंड हो जाएगा e raised to the power t xi plus yi, and this is the joint probability mass function p of xy xi yi. So p of xy, here variables are independent. So independent variables जब भी होते हैं then it will be equal to the product. हमने इसको इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू द multiplication of mxt and m by t, joint moment generating function, right? So this is the small proof, or simple proof of the given statement, given theorem, right? अगर x and y मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt और m by t है, then the sum of mx plus yt will be equal to the product of these moment generating functions. नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज है, इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज द रिमार्क ऑल्सो, कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कभी कभी होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता. किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशंस का, किसी किसी फंक्शन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता. तो उस वाले कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करा जाता है विच इज नॉन एज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज डिनोटेड बाय
phi x of t, and it's equals to expected value of e raised to the power I t x. ठीक है, ये आयोटा टर्म और यहाँ पर आ गई है. So it's equals to minus infinity to infinity e raised to the power I t x and fx of x dx, or in discrete case e raised to the power I t xi p x of xi, right? And this iota is equals to square root of minus 1. So this is the characteristic function when the moment generating function does not exist, and Cauchy density function is such an example for which the second moment or variance does not exist. ठीक है, तो उसका moment generating function भी नहीं exist करेगा, and we have evaluating the characteristic function in that case. From your syllabus, as per your syllabus, only moment generating function will be there. Okay, so but you must know about the characteristic function, concept of characteristic function also. Next, we have some properties of the moment generating function here. These are the important properties. So look at the first property. The MGF of magnified random variable. Sorry. Yes, any problem? Sneha? सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हो गया था. Okay, fine. So the moment generating function of random variable Cx is expressed as, यहाँ पे वेरिएबल में मेरे पास एक कांस्टेंट भी है mcx of t, so it's equals to mx ct. C is not equal to 0. This is the property for the moment generating function. Now if two random variables have same moment generating function, then they must follow the same probability distribution also. This is the second property of moment generating function. Next, you see that if the sequence of a cumulative density function, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, with the corresponding sequence of moment generating function converges to a CDF f of x, then this holds that limit of n tends to infinity, fn of x will be tends to fx, implies that limit of n tends to infinity, mxt will be tends to m of t. In the next property, we have this expression of moment generating function जो अभी हमने starting में evaluate करा था. This is the relation between the moment generating function and the moments. तो rth moment जो होता है about origin, we can obtain by differentiating the moment generating function at t equals to 0. तो हम इस तरीके से भी rth moment obtain कर सकते हैं. This one is, एक तो डेफिनेशन के थ्रू इवेल्युएट किया जा सकता है. डेफिनेशन के थ्रू क्या था, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर आर, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मोमेंट्स आल्सो. सो वी कैन आल्सो इवेल्युएट द rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एंड इट्स इक्वल्स टू द rth derivative of moment generating function at t equals to 0. So from this expression, you can evaluate your first moment about origin, second moment about origin, and so on. तो अगर मुझे suppose first moment about origin निकालना है और moment generating function given है, then it's equals to d by dt of mxt at t is equals to 0. Second moment अगर evaluate करना है, then it's d2 by dt2 mx of t at t equals to 0, and so on. So you can evaluate the moments about origin with the help of moment generating function also. Is this okay? Is this clear?
Is this clear? Clear है ये? Yes, ma'am. So next I'm going to take a problem based on moment generating function. Let the moments of a random variable x about origin are given by expected value of x raised to the power k is equals to 0.8 and k is equals to 1, 2 and so on. Find the moment generating function of x. About origin मुझे given दे रखा है और moment generating function evaluate करना है यहाँ पे. So by the definition of moment generating function, you know that by definition of MGF, mxt is equals to 1 plus t expected value of x, t square by 2 factorial, expected value of x square, t raised to the power k by k factorial, expected value of x raised to the power k and so on. ये होता है. And it's given that expected value of x raised to the power k की जो वैल्यू दे रखी है मुझे वो 0.8 दे रखी है for all k. ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो k की हर वैल्यू के लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज़ टू द पावर k है वो हमेशा 0.8 रहेगी. तो यहाँ से हमने क्या करा, mxt is equals to 1 plus 0.8 summation of t raised to the power k by k factorial. k is equals to 1 to infinite. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ पे उन सब की वैल्यू कितनी होगी 0.8. तो 0.8 हमने बाहर लिख दिया है यहाँ से. नाउ so this is the only value, this is the value. और इसकी जो वैल्यू जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास, ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसका एक्सपेंशन है, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, बताओ ये किसका एक्सपेंशन है. इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर k इज इक्वल्स टू, मैं इसको करती हूँ यहाँ पर, नो नीड टू राइट इट, यहीं पर ही छोड़ दो इसको. Although you can written in terms of exponential term also. तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना होगा k इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, e रेज टू द पावर t क्या होता है, समीशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर k बाय k फैक्टोरियल. तो आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में भी रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो मोमेंट्स यहाँ पर दे रखे थे और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेरे को इवैल्यूएट करना था इन दिस प्रॉब्लम. लुक एट वन अदर प्रॉब्लम जहां पर मेरे को दे रखा है if a random variable x
has a moment generating function given by it's equals to 3 by 3 minus t. Okay, then obtain the standard deviation of x. Standard deviation denoted by sigma x and it's equals to square root of variance of x. ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे इवैल्यूएट करेंगे? वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जिसे हमने लिखा था μ2 इज इक्वल्स टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द मीन। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स we can written as μ2 dash minus μ1 dash square. Now in this problem moment generating function is given and we have to evaluate the standard deviation. कैसे करेंगे इसको? ये दे रखा है 3 minus t raised to the power इसको मैं लिख सकती हूँ 1 minus t upon 3 raised to the power minus 1। इसको एक्सपेंड कर दो यूजिंग द बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, सो इसकी जो वैल्यू होगी t plus 3 t square by 9 t raised to the power r by 3 raised to the power r and so on। तो हमने आपको अभी एक रिलेशन बताया था बिटवीन द मोमेंट्स एंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वो रिलेशन था म्यू आर डैश की जो वैल्यू होती है दैट इज डी आर बाई डी टी आर एम एक्स टी। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू द पावर, एक तो ये मोमेंट्स इवैल्यूएट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के, और दूसरा होता है rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है इट्स इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन में हमने बताया था द कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल इट्स द rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन इट्स इक्वल्स टू mu r dash t raised to the power r by r factorial, r is equals to 0 to infinite। तो जो इसका कोफिशिएंट होगा which is t raised to the power r by r factorial, it denotes the rth moment of the random variable about origin। तो इस एक्सपेंशन से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगी it means it is the coefficient of t by 1 factorial। ठीक है, t by 1 factorial का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 by 3। so this is my expected value। in the same way अगर मुझे evaluate करना है expected value of x square, expected value of x square means coefficient of t square by 2 factorial। t square by 2 factorial का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ से t square by 2 factorial का कोफिशिएंट it means it will be 2 by 9, so it's equals to 2 by 9, right। तो वेरिएंस हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? वेरिएंस ऑफ x मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। now we have both these values which is 2 by 9 and 1 by 9। so variance of x is 1 by 9 and standard deviation
is the square root of variance. So it's equals to 1 by 3. This is the way to evaluate the variance with the help of moment generating function, if the moment generating function is given. So here we have used the definition जो हमने moment generating function के definition से हमने evaluate करा था, क्योंकि t raised to the power r जो r by r factorial था, it means the rth moment of about origin. Is this okay? Any doubt किसी को? किसी को कोई डाउट? Please let me know किसी को प्रॉब्लम है और is it clear? आपके पास जो भी बुक मटेरियल है, जो भी है, इसको एक बार थोरोली रेड करना, जहां पर भी है, अगर नहीं है तो मेरे को बता देना, आई विल सेंड अ सॉफ्ट कॉपी. ठीक है? अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो आज हमने स्टडी करा है मोमेंट्स एंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. Please write your attendance in the chat box, including your branch. नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे. जब भी होगी, मे बी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, तो we'll start distributions. Okay, so I need no problem. Yes or no?